A very warm good morning. A very warm good morning, one and all. I, Dr. Pradnya S. Rokde, Associate Professor, Rachana Sharir Department, welcome all honorable dignitaries, delegates, respected teachers, scholars, and all students. It gives me an immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of Loknete Rajarambapu Patil Ayurvedic Medical College, Hospital, PG Institute and Research Center, Islampur. Department of Rachana Sharir, who has clubbed all of us for the national webinar on applied aspect of Sharir. Now, I request Dr. Ranjit S. Mohite sir, HOD and Professor, Department of Rachana Sharir, to give preface of today's webinar. Please, sir. Good morning all. Today Department of Rachana Sharir of our institute, Loknete Rajarambapu Patil Ayurvedic Medical College, Hospital, Postgraduate Institute and Research Center, Islampur, has arranged the national webinar on applied aspect of Sharir. On behalf of our institute, I heartily welcome today's eminent speakers, Dr. Sachin Khedikar sir, Principal and Professor, Shri O.H. Nazar Ayurved College, Surat, Gujarat, and Dr. Girish Kulkarni sir, HOD and Professor, Department of Rachana Sharir, Sumatibai Shah Ayurved Mahavidyalay, Hadapsar, Pune. I also welcome our respected Dean sir, Dr. Virendra Minkire sir, our PG Director, Dr. Pramod Kanab sir, our PhD Director, Dr. Hauserao Patil sir, our hospital in charge and HOD Sanhita Sitan, Dr. Vishal Patil sir, for this webinar. I also welcome all the respected faculties of our institute as well as from the other institutes who have participated in this webinar. I heartily welcome all the PG students and UG students who have participated in the webinar. This webinar is arranged to give applied view of the concepts in the Sharira. Today, the two eminent speakers will guide us on relevance of Kala Sharir in present day scenario. And the second one is the clinical application of Marma. Thank you. Thank you, sir. Now, I request Oh dear. Hey, madam. Thank you, sir. Now, I request Thank you, sir.
Now I request Dr. Virendra Minkire sir, Dean of Loknete Rajarambapu Patil Ayurvedic Medical College, Hospital, PG Institute and Research Center, Islampur, Professor of Shalya Tantra, to address all the respected dignitaries and students. Please, sir. Good morning, everybody. I, on behalf of the management, the staff, and the students, and in particular the Department of Rachana Sharir, I heartily welcome the honorable dignitaries, the today eminent speakers of today's national webinar, and all my dear staff and students, and all those doctors or the students who are participating in this national webinar. On this special occasion, it's my heartfelt pleasure to invite Honorable Dr. Sachin Hedekar, Principal and Professor, Sri O.H. Nazar Ayurvedic College, Surat, and Dr. Girish Kulkarni, sir, HOD and Professor, Department of Rachana Sharir, Suntibai Shah Ayurvedic Medical College, Pune. And the topics are the clinical aspect of the Marma Sharir and the application, the information of the Kala Sharir in this present situation. Coming to the Marma Sharir and its clinical application, it's a very interesting and important part of the Rachana Sharir, and which is relevant to the first year students, final year students, and the PG students of surgery and allied courses. And it has got a lot of relevance as far as the theoretical part and for the clinical practice. So today the entire, the martial art, the surgical practices, all those things are in concern with the clinical aspect of this Barbasha. So on behalf of all, I wish all the best for the Department of Rachana Sharir, Ranjit Mohite sir, excellent professor, to his team, and I wish all the best for the eminent get this webinar to be conducted in a smooth way. Thank you, Ananda. Thank you, sir, for your words of wisdom. Now, let's head on towards the first session of today's webinar, Applied Aspect of Sharir. The first session will be guided by Dr. Sachinji Khedikar, sir. Let me introduce today's distinguished speaker of our webinar. Honorable Dr. Sachinji Khedikar, sir, is working as principal and professor, Department of Rachana Sharir in Sri O.H. Nazar Ayurvedic College, Surat, Gujarat. He has completed his BMS MD in the Rachana Sharir. Currently, he is doing his PhD. His teaching experience is almost 13 years, in which he has 7 years of PG teaching experience. He is the patent of copyright and copyrights of 4-pulley portable cadaver sectioning machine with sliding table, a novel synergistic herbal formulation for the treatment of obesity and associated disorders. He has also contributed to research work. He has worked on 2 projects funded by university. He has also given immense contribution by working as PhD supervisor. Sir has been felicitated by various awards like Best Sharir Award in 2016, Ayush Gaurav Award 2018, Ayurved Medha Award in 2018. More than 25 research papers are published in national and international peer-reviewed journals and 3 chapters in the journal. He has been credited for reviewer and regional editor, chairperson for national and international conference,
guest speaker in many seminars and conference, keynote speaker in international conference. He has also added designations like dissertation evaluation, practical examination, organizing secretary, nodal officer, Senate member. It will be privilege for me to invite Professor Dr. Sachinji Khedikar sir on this platform on the speaker of session. Topic of his keynote address, relevance of Kala Sharir in present day scenario. Thank you, Loknete madam. I am very much thankful to the organizer and principal of L.R.P. Ayurvedic College, Dr. Virendra Minkire sir, Professor and Head of Department Rachana Sharir, Ranjit Mohite sir, and other PG, PhD directors, as well as today's another guest speaker, my mentor, Dr. Girish Kulkarni sir. Today, my topic is PPT is visible. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Please, a kind request to all participants, please stop the annotations. So, the topic of today's seminar given to me is relevance of Kala Sharir in present day scenario. See, Kala Sharir is a very well topic which is described in Rachana Sharir. Mostly by Sushrutacharya has described this topic in the 4th chapter of Sharir Sthan, that is Garbha Vyakaran Sharir. Because in 3rd chapter, Garbhava Kranti Sharir, he has described the rough or gross development of the embryo. But the detailed development of the embryo is described in the 4th chapter. And in this chapter, first he has described about the Tvacha Sharir, and very next to Tvacha Sharir, he described the Kala Sharir. Many times what happens, this topic is not having so much detailed information, especially for these first year students. So it is somewhat ignored topic, but we have to study each and every topic of our Sharir Sthan with very keen knowledge and with all resources. So in this total presentation, what we will study is general description related to Kala, then nature of Kala, Utpatti of Kala, types of Kala, description related to Kala, then Medodhara Kala, relevance of Kala, and importance of Kala. Our subject is the basic subject. So understanding of basic subject is very important. And after that, what is the clinical application, that we will study one by one. Now, what is Kala? Now, this Kala, 7 Kalas are said to be the interface between the Dhatu and Ashaya. It is rightly said by Sushruta, that is Kala Khalvapi Sapta Sambhavanti Dhatva Shayantar Maryada. Means Kala are the limiting membranes between Dhatu and Ashaya. But is it so? These are not the mere limiting membranes between the Dhatu and Ashaya, but they perform certain functions. And Kala
are comparable with the membranes in the body, which may be the fibrous, serous, or mucus. See, kala are the membranes, and kala are said to be the limiting membranes between the dhatu and ashaya. So, what is meant by dhatu and ashaya? This will be studied in this, right? And what are the different definitions or meanings of the kala? There are so many meanings of the kala which are given in our text. That is Chandra Mandalasya Shodasya Bhagya. Like, but only related to our topic, or it is one of the avayav or body parts, which is explained in the Shabdastoma Mahanidhi. Then another meaning is Kala Shabdo Gunavachi Patitaha. It is indicates the quality, and it also the body parts. So there are total three meanings, means three terms regarding the kala which are important for us. That is, one is membrane. Membrane may be fibrous, serous, or mucus. Second one is part of the body, and third one is the qualities. These three meanings are very important to understand the exact meaning of term kala and the anatomy of the kala. In Sushrutar Tantra commentary given by Acharya Dallana, he has described that Annetu Kala Shabdam Anga Pratyenga Vashma Nanti. This Kala word is implied or it is used for the body parts. Now, what is the meaning of Dhatva Shayantar Maryada? Dhatva Shayantar Maryada, in context of Dhatva Shayantar Maryada, Acharya Dallana has clarified that Dadati iti dhatovo rasarakta mansadaya kapapitta purushanyaphi prakrutani swakarmana dadati dhatva tesham ashaya avasthana pradesha dhatvashaya tesham antareshu maryada sima bhuta ityartha. Means there are 7 dhatus, rasa rakta mansa meda asti majja shukra in our body, but apart from this, kapha pitta purush means 3 mal, and this Tridosh has been performed the physiological function in our body, then they are also known as the dhatus. And the ashayas which hold or which carry such type of entities, they are known as the dhatvashaya. And the limiting membrane between this dhatu and ashaya are said to be the kala. So the partition or lining structure between such dhatu and ashaya are kala. It is clarified by Dallana in context of this Dhatva Shayantar Maryada. Now let us understand this Dhatva Shayantar Maryada by taking one example of this Raktadhara Kala. If you see Raktadhara Kala, what is the definition of Kala? Kala is a limiting membrane or it is an interface between Dhatu and Ashaya. And what is the definition of Ashaya? Definition of Ashaya is a Avasthan Pradesha Ashaya, means whenever there is a hollow space or there will be some space, that is known as the Ashaya, and that is useful for the storage of certain entity. So in this figure, you can see that the lumen, the word lumen is written, that hollow white structure is a Ashaya. And let us consider Dhatu, means the tissue which form this ashaya, it can be considered as a dhatu. Means in between this ashaya and in dhatu, you can see there is a one membrane. That membrane, you can understand, this is the intima. We are taking the example of Raktadhara Kala. So it is the picture of typical artery. And in this artery, you can see there are 3 layers, adventitia, media, and intima. And this intima layer contains this endothelium, and this endothelium lining which is present in this artery, it can be considered as a kala. Why this is kala? Because it is the only limiting membrane, or it is the interface in between this ashaya, this is the allospace, and the constituting tissue of that particular ashaya.
So in this way, we can understand this kala in our way. Now, what is the nature of kala? Nature of kala, यथा हि सार काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते तथा धातुरी माशेषु छिद्यमानेषु दृश्यते स्नायुभिश्च प्रतिछन्दान संतताश्च जरायुनाम श्लेष्मना वेष्टताश्चापि कला भागास्तु तानि। मीन्स कला का स्वरूप या कला के बारे में समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर सिमिली का यूज किया है। जैसे कि कोर ऑफ वुड पीस एक्सपोज बाय कटिंग, मीन्स अगर कोई वुड पीस कोर को देखना है, उसके सेंट्रल पार्ट को देखना है, तो हमें उसको बाहर की जो लेयर है उसको कट करना होता है। सिमिलरली अगर हमें कला देखनी है तो कला को देखने के लिए हमें ऊपर के जो धातु है उनको ये करना पड़ेगा। मीन्स धातुर ही मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। धातु का मीनिंग यहाँ पर होता है अस्थि, और बोन, बोन जो होता है सार बोला गया है, तो उसको अगर देखना है जैसे कि बोन को, तो हमें ऊपर से जो भी लेयर्स होते हैं जैसे कि स्किन है या मसल्स है, इनको डिसेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद में ही हमें बोन दिखता है। वैसे ही अगर हमें शरीर में कला देखनी है तो हमें जो सुपरफिशियल लेयर्स है या जो उसके कवरिंग्स है उसको खोलना पड़ेगा, तभी हम कला को देख पाएंगे। यही इसमें दिखाया गया है कि कोर ऑफ वुड पीस एक्सपोज बाय कटिंग इनटू इट and dhatus of the body are visible by removing the superficial layers. The simile which is used here can be seen. See, this is a typical picture of hardwood. Whenever we want to see this hardwood, we have to dissect these superficial layers. And similarly, this is a transverse section of the our lower limb. And if you want to approach for this bone, we have to dissect all the skin, fascia and muscle layers, then we will be able to see the bone tissue. So similarly, whenever we want to see the inner structures or the structures like the kala, we have to dissect the body parts, then we will be able to understand the kala. And these kala are having the three types. Now these three words, these are pratichanna, satat, veshtita, these indicate the same meaning. Means they indicate the nirmiti or production or formation. Means kala is composed of three types or indicates three basic principles, that is the snayu, jarayu and shleshma. These three basic principles are used for this formation of kala. And kala may be found by the snayu, jarayu and shleshma individually or sometimes by their combination. Means it is not necessary that each and every kala will have all these components, that is snayu, jarayu and shleshma, but individually by single component it can be formed, and by the combination it can be formed. Another quotation by Dallana is अव्यक्तम एव कलानाम अस्तित्वम साधितम भवेत. मीन्स अव्यक्तता जो बताई गई है कला के बारे में, कला को अव्यक्त भी बताया गया है. इट इज नॉट ड्यू टू द सब्टलिटी, मीन्स सूक्ष्मत्व जो होता है या जो माइन्यूटनेस है, माइन्यूटनेस की वजह से उसको नहीं कहा गया है, वो बॉडी के इंटीरियर पार्ट में होती है, इसीलिए उस कला को अव्यक्त कहा गया है. तो ये जो सब चीजें हैं कला के स्वरूप के बारे में हमको जानने को मिलती है. तो इन शॉर्ट अगर हमें कला को समझना है तो कला और त्वचा ये दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों कवरिंग पार्ट्स होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कला इज ए इंटरनल कवरिंग, वेयर एज त्वचा इज ए एक्सटर्नल कवरिंग. त्वचा क्या होती है? एक्सटर्नल कवरिंग होती है. देन कला इज थिन एंड लिमिटेड टू सर्टन ऑर्गन्स, बट त्वचा इज थिक एंड एक्सटेंसिव, मीन्स ये सर्व शरीर व्यापिनी इसको कहा गया है. देन कला की उत्पत्ति के बारे में समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी जो होती है वो हमारे रचना शरीर का एक इम्पोर्टेंट अंग होता है. सभी ऑर्गन्स की एम्ब्रियोलॉजी समझेंगे तो हमें एनाटॉमिकल फैक्ट समझने में आसानी होती है. सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कला, it is written by this Ashtang Sangraha.
एस्तु धात्वाशयांतरेषु क्लेदो अवतिष्ठते स यथार्षोष्मनार विभक्व स्नायुश्लेष्म जरा विच्छन्न काष्ठ इव सारो धातु सार शेषो रस शेषोल्पत्वात् कला संज्ञा. Means kala or this clay which lies between dhatu and ashaya undergoes pachan due to its own heat produced during the dhatu process, and it forms kala. Means whenever there is the formation of process of the body tissues or these ashayas or these dhatus, so many structures are formed. At that time, whenever that clay portion which is present in between this tissue and this ashaya part, it undergoes the process of pachan by the pitta or the body heat which is generated during that process, and that helps to for the formation of this kala. Now we want to understand what is this clay or this clay portion is what. For that understanding of clay the portion, we can give one example of this mucous membrane related to this GIT. GIT mucous membrane is also a type of kala, and in this kala, what we can see, if you take the support of this and modern anatomy, we can see that there are total 3 structures which are present, that is epithelial layer, basement membrane, and the lamina propria. And these layers or this mucous membrane is mostly composed of around 90 to 95% is the water content. Only 5 to 10% are the other structures. So you can understand that this kleda, which is said in our Samhita books, it is very relevant in context of this mucous membrane of the GIT. Now, for better understanding of this utpatti or embryology of this kala, we can put one example of this utpatti of this antra utpatti. You understand in utpatti of the antra, it is said that whenever there is a means essence part of this rakta and kapha is useful for the formation of this antra, and when this vayu and pitta acts on this, then they help for the formation of antra. So in case of the human body, we are studying the embryological aspect of this kala. So in human body is made up of types of tissue. You know, there are total 4 types of tissue in our body, that is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. And these epithelial tissue are mostly, it may be lying the external or the internal surfaces of body and the cavities. This thing is important because among all these 4 types of tissue, epithelial tissue is relevant to our kala sharir. Then epithelia are also derived from all the 3 germ layers, that is ectoderm, endoderm, and mesoderm. So which type of epithelia are important related to this kala sharir? This epithelia from the ectoderm, mostly they are from the outer or near opening part of this body, and the epithelia mesoderm and epithelia endoderm, these are important because these are related with the formation of this kala. When we try to correlate these 7 kalas in context of this embryology, then we can see this chart that Masdhara kala, Raktadhara kala, Medudhara kala, Srishmadhara kala, Purishdhara kala, Pittadhara kala, and Shukradhara kala. These kalas, it is anatomical structure is also given, and their embryological derivation is given. So it can be observed that the epithelium or mesoderm or endoderm are present mostly of the 2 layers, that is endoderm and mesodermal layers. Now in short we can say that क्लेद जो है मीन्स क्लेद को कला की उत्पत्ति में विशेष करके स्थान दिया गया है। खासकर आचार्य वाग्भट का अगर हम सूत्र देखें या सभी जो बाद में के ग्रंथकार है, उन्होंने क्लेद को ओरिजिनेटिंग फैक्टर के इसमें कहा गया है। देन कला
जो होती है कला इज फॉर्म फ्रॉम द वेरी लिटल क्वांटिटी ऑफ द रस एंड इसेंस ऑफ द धातु। इस धातु का जो इसेंस पार्ट होता है और रस शेषोल्पत्वात् ऐसा कुछ श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें ये दिया हुआ है, एंड वेरी लिटिल इसेंस ऑफ द धातु। देन ये मैं आपको मेरी तरफ से बताना चाहूंगा कि कफ और इसेंस पार्ट ऑफ द कफ में कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ कला, and depending upon the effect of vata and pitta it would be differentiated at the स्नायु प्रतिच्छन्न, जरायु सतत एंड श्लेष्मा विस्तृत। इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये मेरी सोच है कि मुझे ऐसे लगता है कि कला के जो अलग अलग विभाग बनते हैं कि स्नायु प्रतिच्छन्न है, जरायु सतत है, श्लेष्मा विस्तृत है, मीन्स फाइब्रस, म्यूकस या सीरस, ये जो अलग अलग उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो उसमें आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो जैसे कि मैंने आंत्र उत्पत्ति में बोला था कि वायु और पित्त, इनकी जो वेरिएशन अगर इसमें आती है, इनके वेरिएशन के कारण ही ये कला में डिफरेंशिएशन होता होगा। एंड कला डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा कैन बी कैटेगराइज्ड एज एपिथेलियम, मेसोथेलियम और एंडोथेलियम कवरिंग्स मोस्टली ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म ओरिजिन। मीन्स ये जो कलाएं हमारे जो बताई है 7 कलाएं, इनका जो ओरिजिन अगर हम देखेंगे तो मेसोडर्म या एंडोडर्मल ओरिजिन से हमको देखने को मिलता है। देन टाइप्स ऑफ कला, कला के प्रकारों में अगर हम जाते हैं तो कला के प्रकार पता ही है सभी को, 7 कला खलु अपि सप्त संभवंती, धात्वा शयांतर मर्यादा, इसमें सब आ जाता है। मांस, रक्त, मेद, श्लेष्म, पुरुष, पित्त और शुक्रधरा कला, ये सीक्वेंस ऑलमोस्ट सभी ग्रंथकारों ने बताया, लेकिन सुश्रुत और वाग्भट में हमें सेम देखने को मिलता है, लेकिन शारंगर और भाव प्रकाश इनमें कुछ उन्होंने थोड़े से नाम अलग दिए हैं, लेकिन कला सभी ने 7 ही बताई है। देन क्लासिफिकेशन में जब हम जाते हैं कला के, तो उसमें हम 2 तरह की क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। एक है उपादान कारण ऑफ द कला, मीन्स कला कितने वस्तुओं से निर्मित है, मीन्स हाउ मेनी components make the kala. That one is the snayu, another is jarayu and shleshma. This snayu can be correlated with the fibrous, jarayu can be correlated with the serous, and shleshma can be correlated with the mucous layer. And when we go for the functional classification of the kala, we can say that some kala may be having the role of the dharana, means only holding of that particular entity. Some kalas are having the quality of shoshan, means absorption. Some may have the property of secretion, and some have the vivation, means the selectivity. These 4 categories can be classified according to the functional classification of the kala. And the mix function may be there, but these are the only 4 categories. In these 4 categories we can understand these kalas. Now among these all kalas, this is first kala is the Mansdhara kala. Now what is Mansdhara kala? Mansdhara tasam prathama Mansdhara नाम esya manse sirasnayu dhamani strotasam prathanam bhavati. This is very important because I specifically underline this fact and see what is the strength and what is the extent of knowledge that our ancient acharyas or Acharya Sushruta has pursued at that time in absence of all these amenities, because I will explain this sloka in detail. जैसे कि इसमें इन्होंने एक सिमिली दिया है कि यथा वृषमुगलानि विवर्धन्ते समन्ततः भूमौ पंकोदकस्थानि तथा मांसि शिरादयः, means root and stems of lotus grow and expand in mud. Similarly, branches of the sirasnayu dhamni srotas, it is spread और situated in the मांसधरा कला और the flesh. ये जो इन्होंने एक सिमिली का उदाहरण दिया है कि मांसधरा कला कौन से की जो मांस को धारण करती है और धारण करने के साथ में ही जो सिरास्नायु धमनी स्रोत है, इनके प्रतान मीन्स ब्रांचेस जो है इसमें स्प्रेड होते हैं। और आचार्य हिंदू ने ये जो प्रथम कला है मांसधरा कला, इसको रस विशेष कला का नाम दिया है। इसको अभी हमें देखना है कि इसका एविडेंस क्या है प्रथम मांसधरा कला का। एक रिसर्च पेपर है जो मुझे ढूंढते हुए मिला था कि एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन डीप फैसिया डेवलपमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो हमारे आचार्य है अभी
खासकर बीजी गानेकर जी है या जो भी आचार्य, उन्होंने कोरिलेशन जो है डीप फैसिया के साथ में किया मांसधरा कला का। तो इसमें हमें समझना जरूरी है, ये इन्होंने 5 जो फीटस कैडावर थे, वो फीटस स्पेसिमेंस लिए थे उन्होंने, और उसमें उन्होंने स्टडी किया, उसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी भी की, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की। उसमें ये रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, कि डीप फैसिया इज प्रेजेंट from week 21 of the human development in the lower back, upper and lower limbs. Blood vessels, blood vessels and nerves develop parallel to it and occasionally cross it from deep to superficial plane. And this presence of TCF4 fibroblast in the deep fascia suggests a crucial role for this structure of muscle morphogenesis. Means not only this deep fascia is having the role of supporting these branching structures of the serous snayu vessels nerves. Apart from that, the presence of this TCF4 plus fibroblast are also help for the muscle morphogenesis. Means see, this is the role of this deep fascia in the formation of these muscles or mas dhatu in our context. And whatever is said in our Samhita is this kala is having the branches of Sira, Nayu, Samani and Strotas. And when we go to the details of this deep fascia, as we know, deep fascia is a fibrous sheath and it is having the, it also contains this intermuscular septa and fibroalveolar sheaths भी इससे बनते हैं deep fascia से. Deep fascia is having the 3 ingredients, that is covers each muscle as a epimysium, which sends in septa to enclose the muscle fasciculus known as the perimysium. मीन्स इसमें टोटल 3 होते हैं कि जो सबसे मसल के ऊपर में होते हैं इपीमाइजियम होते हैं, फिर जो फैसिकुलस को कवर करने के लिए पेरीमाइजियम होता है, और ईच मसल फाइबर को जो कवर करने के लिए एंडोमाइजियम. मीन्स ये इपीमाइजियम, पेरीमाइजियम और एंडोमाइजियम, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो डीप फैसिया के पार्ट होते हैं. और ये डीप फैसिया ही देख सकते हैं आप नीचे की सबसे लाइन में कि थ्रू ऑल दिस कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, arterioles, capillaries, venules, lymphatics and nerves traverse to reach each muscle fibers. Means जो path होता है, path of this network of arterioles, capillaries is provided by this deep fascia or the derivatives of this deep fascia. And in our Acharya Sushruta also said the same thing, that is Siras Nayu Dhamani Strotosam Pratanam Bhavati. So you can understand that our Rishi Munis have described this structure is very well in very Sutra Swarup. Then coming to the next kala, that is the Dvitiya Raktadhara Nama Mansasya Abhyantarata Tasya Sonitam Visheshatassu Shirasu Ekrut Plihosya Bhavati. Raktadhara kala is comparable with the endothelial lining of the blood vessels and sinuses of the liver and the spleen. इसके सीधा अप्लाइड पार्ट में मैं आता हूँ, क्योंकि सभी कला का बेसिक और अप्लाइड पार्ट नहीं होगा, तो एक मिक्स तरह से किया है, सभी कलाएं कवर हो, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज हो मैं बता सकूं ज्यादा से ज्यादा. इसमें द्वितीय रक्तधरा नाम मांसस्य आभ्यंतरता तस्या शोणितम विशेषतश्च शिरासु एक्टुक्लियोस्य भवति. मींस इसका जो कोरिलेशन है, इफ यू try to correlate this rakta kala, it is comparable with the endothelial lining of the blood vessels and sinuses in the liver and the spleen. Now this endothelium separated from the surrounding outer layers of the basal lamina. You can see we have already taken previously example of this raktadhara kala. So this internal, that is tunica intima, is having the certain structures that we can understand. Means the finite branches of vascular tree are the capillaries and the sinusoids. And what are the constituents of these capillaries? They are the endothelial cell, basal lamina, and there are few cells, that is the pericytes. Means ये जो 3 चीजें होती है, endothelial cells, basal lamina और pericytes, ये 3 चीजों से मोस्टली ये जो माइन्यूट स्ट्रक्चर है कैपिलरीज और साइनोसाइड्स के वो बने होते हैं. पहले ये देखा जाता था, मीन्स इसका मैं बहुत इसलिए कहता हूँ, इसके ऊपर में हमने पीजी में थीसिस भी लिया था, वो मैं आगे बताऊंगा, कि एंडोथेलियम इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन ऑर्गन. पहले इस पे डिटेल स्टडी नहीं हुई थी, तो इसको एक सिर्फ
मेम्ब्रेन की तरह या इपिथेलियम की तरह काउंट करते थे, लेकिन इसमें अभी रिसर्च से पता चला है कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस वाइटल फॉर द वैस्कुलर हिमोस्टोसिस। होमोस्टोसिस, वैस्कुलर होमोस्टोसिस मेंटेन करने के लिए इसका बहुत बड़ा जो रोल होता है वो एंडोथेलियम का होता है। और इसमें क्या क्या चीजें होती है? रेगुलेशन ऑफ वैस्कुलर टोन, ल्यूमिनल डायमीटर, ब्लड फ्लो, hemostasis, thrombolysis, platelet and leukocyte vessel wall interaction, regulation of vascular permeability, tissue growth and remodeling. Please remove the annotations. Annotations नहीं करना है. So what I want to say that this Raktadhara Kala, which is said in our Samhita, that is the मांसस्य आभ्यंतर तस्य शोणितम विशेषतस्तु शिराशु एक्तुप्रियोस्य भवति। इसका कोरिलेशन जब हम करते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ में, तो इसमें हमें पता चलता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा जो रोल है वो हमको देखने को मिलता है। मीन्स कला के बारे में जो हमने देखा था कि कला, दीज आर नॉट ओनली द mere limiting membrane, but they are having the certain qualities and certain properties. They perform certain functions in our body that we can understand with the help of this example of Raktadhara Kala. Now third Kala is the Medodhara Kala. In Medodhara Kala is as you know, Trutiya Medodhara Nama Medohi Sarvabhutana Mudarastham Anvastishucha Mahatsucha Majja Bhavati. Meda is present in the abdomen of all animals. इसमें देखिए कि ये बहुत ही डिटेल में मैंने इसको पढ़ा है, इसके लिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेदोधरा कला के बारे में आपको दो तीन चीजें मैं बता दूंगा कि जो सिमिलीज है, जैसे बाकी कलाओं के बारे में वो वर्णन नहीं किया है। बाद में इसका कोई फंक्शनल एस्पेक्ट भी इसमें नहीं बताया। विस्तृतिया मेदोधरा मेदोही सर्वभूतानाम उदरस्थम अन्वस्तिषु ऐसा बोला है, और बाद में इन्होंने ये मज्जा कहाँ रहती है इसके बारे में वर्णन किया है। लेकिन खासकर उधर में बहुत सारे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। मीन्स अगर हम देखेंगे कि सुपरफिशियल फैशिया है, अंदर जाते हैं तो वपा वहनम है, मेसेंट्री है, फैट है, एब्डोमिनल फैट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो एब्डोमेन में फैट या एडिपोस टिश्यू के अंतर्गत आती है। लेकिन इसमें से एग्जैक्टली मेदोधरा कला का कोरिलेशन किसके साथ किया जाए, ये थोड़ा अभी भी डाउटफुल टॉपिक है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर जगह पर उन्होंने उधर ये लोकेशन बताए मेद के बारे में। कोष्ठांगों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो उसमें वपा वहनम का उल्लेख आया है, लेकिन वपा वहनम हम देखते हैं तो इट इज ए कोष्ठांग। तो कला होगी या नहीं होगी ये भी एक क्वेश्चन मार्क बनता है। तो ये एक टॉपिक है कि जिसके ऊपर में हमको काम करना चाहिए कि मेदोधरा कला का कोरिलेशन किसके साथ में करना चाहिए। कला के सीक्वेंस के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा इस विषय पर कि जैसे मांसधरा, रक्तधरा, मेदोधरा, श्लेष्मधरा, पुरुषधरा, पित्तधरा, शुक्रधरा कला, ऐसा इसमें सीक्वेंस आया है। लेकिन सीक्वेंस ऑफ धातु फॉर्मेशन कैसा होता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु फॉर्मेशन सीक्वेंस है। तो इसका और कला का कोई संबंध नहीं है। तो इससे हमें एक चीज का एक गेस मिलता है कि क्लू मिलता है कि इट इज नोटिस दैट कला आर डिस्क्राइब फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीपर प्लेन। मीन्स कला का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो सुपरफिशियल टू डीप होता है। वो क्यों? देखिए कि क्रोनोलॉजी अगर हम देखेंगे सुश्रुत संहिता शारीर स्थान चैप्टर नंबर 4 में, तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने त्वचा का वर्णन किया है, और वेरी नेक्स्ट आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्किन ही हैज डिस्क्राइब द कला। ठीक है, कला में भी अगर हम सीक्वेंस में देखते हैं तो कला में सबसे पहले मांसधरा कला का वर्णन किया है। उसमें अगर हम देखेंगे कि मांसधरा कला का कोरिलेशन डीप फैसे के साथ में यदि करते हैं तो मांसधरा कला डीप फैसिया ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद में होता है, राइट। तो ये पहला हो गया। देन
सेकंड कला जो है वो रक्तधरा कला, उसका वर्णन कहाँ मिलता है हमें, मांस के अंदर, मांसस्य आभ्यंतरतः, या तो यकृत या प्लीहा। तो डेफिनेटली ये सोच सकते हैं कि मांसधरा कला के डीपर प्लेन में रक्तधरा कला है, तो डेफिनेटली हम ये उसे एज्यूम कर सकते हैं कि मेदोधरा कला भी इन दोनों के डीपर प्लेन में हो सकती है। तो इससे हम ये चीज ये कर सकते हैं कि जैसे कि सुपरफिशियल, जैसा सुपरफिशियल फैसिक स्ट्रक्चर होता है एब्डोमिनल रीजन में, और पता है कि आपको इट इज डबल लेयर, तो दैट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस मेदोधरा कला। मेद के बारे में बहुत सारा वर्णन इसमें मैंने दिया हुआ है। मुझे शॉर्ट में जो इसमें बताना था कि विसरल फैट एक चीज इसमें होती है एब्डोमिनल कैविटी में, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि पैक्ड बिटवीन द ऑर्गन्स, मीन्स ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी, जिनके बीच में ये रहता है विसरल फैट, एंड दिस विसरल फैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर फैट, and the fat in the abdomen is mostly visceral and semi fluid. See, सेमी फ्लूइड कंडीशन में कोई फ्लैट होता है तो विसरल फैट होता है, और ये विसरल फैट फंक्शनली भी बहुत सारा एक्टिव होता है। आजकल आप जो देखते होंगे साइटोकाइन स्टार्म जो कोविड पेशेंट में देखने को मिलता है, या जो इंटरल्यूकिन 6 लेवल जो हम ये देखते हैं कोविड पेशेंट में, तो वो इंटरल्यूकिन 6 भी जो फॉर्म करने का जो काम होता है ये विसरल फैट के द्वारा ही होता है। तो मोस्टली ये जो मेदोधरा कला बताई है आयुर्वेद में, उसका कोरिलेशन अगर किसके साथ हो सकता है तो विसरल फैट के साथ में हो सकता है। बाकी के जो स्ट्रक्चर है उनके मीन्स एक्चुअली स्टडी होनी चाहिए फॉर परफेक्ट इवैल्यूएशन, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो विसरल फैट की ज्यादा है, क्योंकि विसरल फैट जो होता है बहुत एक्टिव होता है। देन कला परफॉर्म सम वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। थोड़ा क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में इसमें बताना चाहूंगा कि कला जो है वो बॉडी में कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और एनी डिफॉर्मिटी और इट्स माल फंक्शन में लीड्स टू द पैथोलॉजी। मीन्स अगर ये कला है, इनको हमने देखा अभी तक कि इनमें कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं, अगर ये फंक्शंस नहीं हो पाते हैं सही तरह से तो उसमें कुछ ना कुछ पैथोलॉजी आ सकती है। तो डोसाज मूविंग अक्रॉस द बॉडी, ये पता है कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावता मित्र संग वैगुन्नाथ व्याधिस तत्रोपजायते। तो ये आपको सूत्र सबको पता है कि अगर कोई बॉडी में डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है या कोई उनको सुटेबल प्लेस मिलता है तो वहां जाके वो व्याधि की उत्पत्ति करती है। तो कला भी ऐसा हो सकता है कि कला में भी अगर विकृति आती है या कला में उसमें कुछ ऐसी दोष दूष्य समुच्चना होती है तो कला भी अफेक्ट हो सकती है, और कला के अफेक्ट होने से हमारे बॉडी में डिसीज हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये इट कैन बी ए साइट ऑफ पैथोलॉजी, और जो उसमें लो और हाई सिवियरिटी ऐसे दोनों भी हो सकते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ चौथी कला जो है चतुर्थी श्लेष्मधरा नाम सर्वसन्निषु प्राणभूतां भवति भवंती चात्र स्नेहाभिक्तो एता एक चक्रम साधु प्रवर्तते। सबसे लास्ट में जो लिखा है कि संदये साधु वर्तन्ते संश्लिष्टा श्लेष्मनास्ततः। इस जो चौथी कला है श्लेष्मधरा कला, उसका मेन काम क्या है कि साधु वर्तन्ते संश्लिष्टा श्लेष्मना तथा। में श्लेष्मधरा कला से श्लेष्मा जो होता है वो जॉइंट्स मूवमेंट्स प्रॉपर करने के लिए, साधु में सिंपल, साधु का मीनिंग होता है सिंपल, सिंपल मूवमेंट करने के लिए या विदाउट फ्रिक्शन मूवमेंट करने के लिए इसकी मदद होती है, ये आचार्य सुश्रुत में लिखा हुआ है। सो श्लेष्मा और श्लेष्मधरा कला फैसिलिटेट द जॉइंट मूवमेंट्स, एंड एज यू नो दिस synovial fluid or synovial membrane helps means sound, friction, heat generation etc are prevented during the movement of joint because of presence of this श्लेष्मा और श्लेष्मधरा कला। तो हमको यही देखना है कि जानू में श्लेष्मधरा कला अगर किसी की अच्छी है, उसमें प्रोडक्शन प्रॉपर मात्रा में होता है, तो जो हमारे जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो नहीं होंगे, बराबर है। क्योंकि माल फंक्शनिंग, इसका जो फंक्शन है वो है जॉइंट को आधार देना या जॉइंट के फंक्शन को प्रॉपर करना, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करना या डिजेनरेशन नहीं होने देना। अगर ये कला का काम बिगड़ गया या इस कला में विकृति आ गई,
साइनोवियल मेम्ब्रेन में डैमेज हो गया, तो उसके कारण से क्या हो सकता है कि इसमें जो फंक्शंस है वो डिमोलिश हो जाएंगे और धीरे धीरे उसमें हमें डिजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी हमको पता है कि मेनी टाइम्स वी यूज द जानू बस्ती for the patients related to arthritis, mostly osteoarthritis patients, we used to perform this Janu Basti. So we can also think that this Janu Basti may be helpful for the function of this Leshmadhara Kala. So this can be one new instinct that we can think about this Kala. And the diseases related to this synovial membrane can be this synovitis. Synovitis is one of the disease which is related with this the synovial membrane. And this arthritis as well as the lupus, gout, रूमेटाइड आर्थराइटिस, इनमें भी ये साइनोवाइटिस हमको देखने को मिल सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई कला है और कला का काम हैम्पर होता है, वृद्धि होती है, क्षय होती है, मीन्स एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी कुछ भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में कला अगर बिगड़ जाती है तो उससे कारण से बहुत सारे डिसीजेस उसमें हो सकते हैं। तो पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स आप कला के दृष्टि से अगर हमें देखना है तो हम इस तरह से भी कला को स्टडी कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है पंचमी पुरुषधरा नाम या अंतकोष्ठे मलम अभिविभजते पक्वाशयस्था, मीन्स मल को विभाजन करने का जो मेन काम है वो पुरुषधरा कला के माध्यम से होता है। तो ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका कोरिलेशन मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि सर्ज एज ए सेपरेट इसके साथ कर सकते हैं कि कोलॉन और रेक्टम, इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके साथ में इसका कोरिलेशन हो सकता है। और उसके बारे में हम देखेंगे कि इट सर्व्स टू सेपरेट द फीकल रिफ्यूजेस इन द पक्वाशया फ्रॉम द अदर इंजेस्टेड मैटर्स। इसका मेन काम वही है, उंडुकस्ते विभजते मलम मलधरा कलाहा, तो सेपरेट द फीकल रिफ्यूजेस इन द पक्वाशया फ्रॉम द अदर इंजेस्टेड मैटर। और अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज एडेप्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ मैटर रीचिंग इट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एपिथेलियम इज एब्सॉर्प्टिव कॉलमनर बट विलाई आर एब्सेंट। इसका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये एब्सॉर्प्टिव नेचर के लिए बना गया और स्टोरेज। हेलो, देन what is the role functions of this colon? This is the lubrication of the pieces by the mucous membrane, absorption of the water, salts and solutes, bacterial flora, vitamin B synthesis होता है, antibodies of IgG group होते हैं, और सेंसरी फंक्शन मीन्स इतने सारे फंक्शंस जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसमें ये सब होता है। और अगर इस कला में अगर डिफॉर्मिटी आती है, इफ देयर इज ए डिफॉर्मिटी इन रिगार्ड ऑफ दिस कला, उसमें क्या क्या हो सकता है? अगर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रॉपर म्यूकस सिक्रेशन नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी उसमें क्रोनिक डायरिया हो सकता है, कोलाइटिस होता है, आईबीएस आपको पता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिसीज जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है। तो इन तरह की बीमारियां हो सकती है अगर ये कला में डिफॉर्मिटी आती है। इस कला पुरुषधरा कला, तो कला को हम इस एंगल से भी देख सकते हैं कि, और उसके लिए आयुर्वेदिक कुछ उपचार भी हम सोच सकते हैं। ट्रीटमेंट साइड के ऊपर में मैं आऊंगा नेक्स्ट इसमें। सिमिलरली इनके साथ पित्तधरा कला, पित्तधरा कला के बारे में भी ऐसे लिखा है कि तज्जीर्यति यथा कालम शोषितम पित्त तेजसा, मीन्स अन्न का पचन करना या उसका डाइजेशन करना, ये उसका मेन काम होता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है स्पेसिफिकली फॉर द डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन पर्पज से ही बना गया है। और ये जो पित्तधरा कला के बारे में और भी ये लिखा है कि अग्नि इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रहणी, या ग्रहणी इज द हार्बरेज ऑफ द अग्नि। अग्नि का स्थान जो ग्रहणी है और ग्रहणी अग्नि के इसमें आती है, तो ये दोनों का आपस में रिलेशन होता है। और इनमें अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है, दृष्टि होती है, तो वो सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजेस को कर सकती है हमारे बॉडी में। उसमें बहुत सारा लिखा है पित्तधरा कला के बारे में कि अगर लाइफ, हेल्थ, वीर्य, ओज, पंचभूत, अग्नि, सप्तधात्वाग्नि, ये जो सभी होते ग्रहणी के अधीन होते हैं। और अग्नि के कारण ही बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ग्रहणी है, अल्सर्स जैसे कि पेप्टिक अल्सर है, यहाँ पर आईबीएस, क्रॉन्स डिसीज, सीलियाक डिसीज। सीलियाक डिसीज के बारे में मैं बताता हूँ कि जो ग्लूटेन
की एलर्जी होती है कुछ पेशेंट्स को, उनमें सीलियाक डिसीज पाया जाता है कि वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये सीलियाक डिसीज। तो इस तरह की जो बीमारियां है ये हमें इस पित्तधरा कला की अगर इसमें विशेषण है या इसमें कुछ खराबी है तो इसमें हमको देखने को मिल सकता है। शुक्रधरा कला तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि जिसमें यह सर्व शरीर व्यापी नहीं ऐसे बोला गया है, लेकिन स्थानिक शुक्र को समझाने के लिए आचार्य सुश्रुत ने यही लिखा है कि द्वयंगुले दक्षिण पार्श्वे, ये जो श्लोक है इसमें दिया हुआ है पूरा। तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा कि सीमेन आपे मैन एक्सक्रीटेड अंडर द एक्सिलरेशन आफ्टर द एक्साइटमेंट। जो शुक्र है वो ड्यूरिंग द क्वाइटस इट इज एक्सपर्ड फ्रॉम अवर यूरेथ्रा और द पेनिस। तो इसमें कला को कैसे हमको समझना है कि वन स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस एंड एक्यूमुलेट इन द एपिडिडाइमिस, दे रिले ऑन द ductus or vas deferens and ejaculatory duct to propel them into the urethra and out of the penis during the ejaculation. Means sperm जब बनते हैं कहाँ पर बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद में उनका जो एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट है या सेमिनिफेरस, ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं ये स्ट्रक्चर्स में वो स्टोर्ड रहते हैं। और वहां से जब भी क्वाइटस होता है तो क्वाइटस के ड्यूरिंग इजैकुलेशन के लिए फैसिलिटेट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स का कोरिलेशन हम शुक्रधरा कला के साथ में कर सकते हैं। दूसरा कोरिलेशन हम इसके साथ में हो सकता है क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स सर्टोली सेल्स से जो बना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो मेन प्रोसेस होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होती है और वहां से ही इमैच्योर स्पर्म निकल के आगे के प्रोसेस में वो मैच्योरेशन उनका होता है। तो राइट फ्रॉम दिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल अप टू दिस वासा डिफरेंसिया एंड दिस इजैकुलेटरी डक्ट और सेमिनल वेसाइकल्स, ये सब जो पार्ट है वो शुक्रधरा कला के अंतर्गत आ सकते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सार्वधिक शुक्र की बात करने के लिए अगर लेडिक सेल से जो टेस्टोस्टेरॉन होता है या एंड्रोजन्स है, ये सार्वधिक शुक्र के बारे में हम समझ सकते हैं। दूसरा है भाषा डिफरेंसिया, ये तो इसमें से फिगर समझाने के लिए है कि ये समझ सकते हैं कि दिस इज द यूरेथ्रा और यूरेथ्रा में यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोस्टेट, इधर से ये वैसा डिफरेंसिया आता है, सेमिनल वेसाइकल्स, इन दोनों को मिला के एजैकुलेटरी डक्ट बनती है और प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड्स के सिक्रेशन, ये सब सिक्रेशन मिल के फिर कंप्लीटली ये सीमेन बनता है। और इसका रोल बहुत बड़ा होता है बॉडी में क्योंकि स्पर्म काउंट ही जरूरी नहीं है, स्पर्म के अलावा सीमेन की जो भी चीजें होती है वो प्रजनन का जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसके लिए जरूरी होता है। ये सब इस स्लाइड में मैंने मेंशन किया है कि कला का हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि इनका जो सिक्रेशंस होते हैं सीमेन के, प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द मेन। देखिए कि मेंस में हमको पता है कि यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन दोनों के बीच में स्पर्म को ट्रैवल करना होता है, तो उसका पैसेज ठीक हो, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हो, इसके लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सेमिनल फ्लूइड के जो ये होते हैं वो 72 सेमिनल वेसिकल से ज्यादातर पाए जाते हैं और ये जो भी सप्लीमेंट्स रहते हैं इसमें कि फ्रुक्टोज है, साइट्रिक एसिड है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, फाइब्रिनोजिन, इनका रिप्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें हमको यही देखना है कि शुक्रधरा कला का जो कोरिलेशन हमारे इसमें कर सकते हैं, शुक्रधरा कला का, मैं स्थानिक शुक्र की मैं बात करता हूँ, उसका जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, वैसा डिफरेंस है या जो सेमिनल वेसाइकल्स है, इन सब के साथ में हो सकता है क्योंकि इनमें भी अगर डिफॉर्मिटी आ सकती है, जैसे आप पढ़ सकते हैं कि सेमिनल वेस्कुलाइटिस अगर होता है किसी पेशेंट को तो इट कैन कॉज द पेन इन लोअर एब्डोमेन, स्क्रोटम, पेनिस, पेरिटोनियम, पेनफुल इजैकुलेशन एंड द ब्लड इन द सीमेन। और इसके डिसीजेस कौन से हो सकते हैं, सेमिनल वेसिकुलाइटिस, इसमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, सिस्टोसोमियासिस हो सकता है, हाइड्रेटेड डिसीज, मीन्स इस तरह के डिसीजेस इन कला में हो सकते हैं। और ये कला अगर खराब हो जाती है तो इसके कारण से जो इसका मेन फंक्शन है शुक्र का प्रजोत्पादन का, रिप्रोडक्शन का, वो हैम्पर हो सकता है।
तो ये सब चीजें हम कलाओं के बारे में अलग अलग एंगल से स्टडी कर सकते हैं। एक तो उनका कोरिलेटिव एंगल्स, उसके फंक्शनल एंगल को हम पढ़ सकते हैं। फंक्शनल एंगल के साथ में उसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है, माल फंक्शन होता है, तो उसमें हम क्लिनिकली क्या सोच सकते हैं वो देखना है। और इसका कोरिलेशन करके उसका रोल बॉडी में क्या हो सकता है वो भी हमको इस तरह से कला के बारे में सोच सकते हैं। ये अभी आई थिंक टाइम बहुत हो गया है इसमें, मुझे लगता है कि 8-10 मिनट ही बाकी है एक ओवर के लिए। कोविड-19 ये अभी प्रेजेंट टॉपिक है, इसके लिए मैंने थोड़ा इसको इंक्लूड किया था। आपको शायद पता होगा कि कोविड के बारे में तो सभी पता है, मुझे जो एक बात बतानी है यहाँ पर कि टाइप 2 न्यूमोसाइट और टाइप 1 न्यूमोसाइट्स लंग्स में हमको देखने को मिलते हैं। और ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का जो रोल होता है कि फॉर रिपेयरिंग डैमेज टू द अल्वियोलर लाइनिंग एंड आल्सो सीक्रेट द सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट जो होता है इसका रोल अल्वियोलाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और alveoli are lined by the fluid layer known as a surfactant which maintains the shape and surface tension of the air sac. Surfactant dysfunction leading to the collapse of alveoli. देखिए alveoli का अगर कोई फंक्शन प्रॉपर करना है तो उसके लिए भी ये सर्फेक्टेंट का बहुत रोल होता है। और सर्फेक्टेंट आपको पता है कि एक थीन लिक्विड की लेयर होती है, फास्फोलिपिड लेयर होती है। तो ये भी एक कला ही हम समझ सकते हैं। भले ग्रंथ में हमारे 7 कलाओं का वर्णन किया है, 7 कलाओं को आपको एक्सटेंसिवली पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर भी ये मेम्ब्रेन होते हैं या इनके ऊपर में भी हमने थोड़ा सा फोकस करके रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। और आयुर्वेद की दृष्टि से इस कला को ठीक करने के लिए या सर्फेक्टेंट को अच्छा करने के लिए हम क्या ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं ये भी हम सोच सकते हैं, ताकि हमारे अल्वियोलाई अच्छे रहे। या जैसे एम्पाइजिमा जैसी बीमारियां होती है कि जिसमें अल्वियोलाई श्रिंक हो जाते हैं तो या डायलेट हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसका सरफेस टेंशन मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होती है तो सर्फेक्टेंट पे होती है। तो सर्फेक्टेंट जो मेम्ब्रेन है उसको अगर प्रॉपर करने के लिए हम किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं ये भी अगर हम सोचेंगे तो लंग्स रिलेटेड कोई भी डिसीजेस है तो उसके ऊपर में भी हम काम कर सकते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट्स है। ये अल्वियोलाई के बारे में बताया। अभी ट्रीटमेंट साइट, जैसे कि आज का मुख्य विषय यही था कि क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द कला, कला को समझना बहुत जरूरी था। इसमें मैंने पहले भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, ये एग्जांपल मैं यहाँ पर भी देता हूँ कि कला कैन बी कंसिडर्ड इन द थेरापेटिक एस्पेक्ट्स व्हिच इज नॉट प्रिवेलिंग इन द प्रेजेंट टाइम्स। जैसे कि आप अलग अलग एस्पेक्ट से देखते हैं कि कुछ लोग त्रिदोष की चिकित्सा करते हैं, मीन्स 3 दोषों को सेंटर पॉइंट रखकर चिकित्सा करते हैं। कुछ लोग धातु के अंदर में कुछ काम करते हैं, मीन धातु को टारगेट करके चिकित्सा करते हैं। जैसे वैद्य दातार शास्त्री महाराष्ट्र के वो पंचभौतिक चिकित्सा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग विद्वान है आयुर्वेद में भी कि जो अलग अलग पर्सपेक्टिव से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में अगर कला बताए, रचना के हिसाब में अगर कला बताई है तो कला ये सिर्फ लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। दीज आर नॉट ओनली द इंटरफेस, दीज आर हैविंग द सर्टेन प्रॉपर्टीज, मीन उनके फंक्शन में अगर माल फंक्शन होता है, डिफॉर्मिटी आती है तो उनके कारण से भी बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं जिनकी चर्चा अभी तक हमने करी है। तो उनको अगर सेंटर पॉइंट रख के भी हम एक ट्रीटमेंट साइट के बारे में सोच सकते हैं। ये मुझे इस माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से मुझे आपको बताना है। और इसी को ध्यान में रखकर व्हेन आई वाज द पीजी गाइड इन द महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज वर्धा, at that time we have gone through this research project. We have performed the one research project on this रक्तधरा कला। अभी रक्तधरा कला के फंक्शंस हमने देखे थे कि जो परमियाबिलिटी है, हिमोस्टोसिस है या एंडोक्राइन टाइप का काम करती है रक्तधरा कला। तो उसी को सेंटर पॉइंट रखे कि जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस एक वेसल्स की बीमारी होती है, आर्टरी में होता है, तो इसमें कुछ रक्तधरा कला का रोल है क्या, ये असेस करने के लिए हमने इस टाइप का एक स्टडी किया था कि द स्टडी ऑफ एंटी लाइपोलाइटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑफ रक्त प्रसादन द्रव्य इन अल्बिनो रैट्स विद रेफरेंस टू रक्तधरा कला। इस एक हमने आसो प्रिपेयर किया था इसमें, और वो एक स्पेसिफिक डोज में एक एथेरोस्क्लेरोसिस का मॉडल लिया था एनिमल का, एथेरोस्क्लेरोसिस इंड्यूस करके फिर बाद में उनमें वो आसो का डोज दिया गया और फिर रिजल्ट्स कंपेयर किए गए और इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हमको देखने को मिले। तो ये भी एक हमारा विजन हो सकता है कि कला को टारगेट करके या थेरापेटिक एस्पेक्ट्स में भी कला को हम देख सकते हैं। ये हमको सोचना चाहिए इस बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ कला में
लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि सुश्रुत संहिता में आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 4 आप कल्पस्थान का जो चैप्टर नंबर 4 है, उन्होंने विश्व वेग में इसका बहुत सारा वर्णन किया है कि जब स्नेक ह्यूमन को बीट करता है तो जो पॉइजन के जो है वो कला के अलग अलग इसमें जाता है, मीन्स प्रथम कला, द्वितीय कला, ऐसे एक एक कला को ये करके वेगों का उन्होंने कोरिलेशन इसमें दिया है कि 7 विश्व वेगास इन 7 इन नंबर्स। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि धात्वांतरेषु ये सप्त कला तास्वे एकामति क्रमम वेगम प्रकृते विषम। इस विष के जो 7 वेग है, इन 7 वेगों का कोरिलेशन उन्होंने कलाओं के साथ में किया है। इसमें रस रक्त के बीच में जो ये पहला वेग बताया, रस रक्त मांस के बीच में द्वितीय वेग है। इस तरह से उन्होंने अलग अलग वेग का इसमें वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर मेद फिर कफ यहाँ पर आया है, मेद और अस्थि यहाँ पर नहीं है, मेद कफ आया, कफ पुरुष आया है, पुरुष पित्त का वर्णन है और पित्त शुक्र, इस कलाओं का यहाँ पर हमें वर्णन देखने को मिलता है। और ये भी जो हाईलाइटेड पोर्शन है, एव कला पुरुष धरा स एवास्ति अस्थि धरा कला में, जो पुरुष धरा कला है उसी को अस्थि धरा कला बताया है आचार्य डल्लन ने, और जो पित्त धरा कला है उसी को मज्ज धरा कला बताया है। तो ये भी एक क्लिनिकल एस्पेक्ट है कला के बारे में, और इसके ऊपर में बहुत सारे रिसर्च वर्क हो गए हैं। जो पीजी स्टूडेंट्स है या जो टीचर्स है उन सबको शायद पता होगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो है पुरुष धरा कला को ही अस्थि धरा कला और पित्त धरा कला को ही मज्ज धरा कला, ऐसा आचार्य डल्लन ने कमेंट्री में लिखा हुआ है। तो इसके रिलेटेड बहुत से जो रिसर्च वर्क वो हो गया है और उसमें काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमको देखने को मिले हैं। तो ये सब जो चीजें हैं कला के बारे में, ये हमको देखना है। मीन्स सबसे पहले कला की जो उत्पत्ति है, कला का मीनिंग है, एग्जैक्टली मीनिंग देखना चाहिए। उसका कला के स्वरूप के बारे में हमने देखा है, नेचर ऑफ कला देखा है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो देखा है। उसके बाद में अलग अलग कलाओं का विवरण देखा है, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, उसका मॉडर्न एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से कोरिलेशन कैसे हो सकता है, ग्रंथ में क्या बताया है, और इसमें यूटिलिटी कैसे कर सकते हैं, यूटिलिटी ऑफ दिस कला इन अवर डे टू डे प्रेजेंट डेज लाइफ, वो भी हमको देखना है। ये इतने कम समय में एक मैं व्यू आपके सामने रख सकता हूँ, वो धीरे धीरे इसके ऊपर में हम जब काम करते हैं तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो व्यू मुझे देना था कि कला को एज ए ट्रीटमेंट साइट हमको देखना चाहिए, एक पैथोलॉजिकल साइड भी देखना चाहिए, एक फंक्शनल एस्पेक्ट से भी देखना चाहिए, एनाटॉमिकल एस्पेक्ट से देखना चाहिए, तभी हमें इस कला का संपूर्ण तरह से ज्ञान होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई बीमारियां होती है, इससे रिलेटेड कोई डिसीजेस है, तो उनको भी हम प्रॉपरली एड्रेस कर सकेंगे आयुर्वेद के माध्यम से। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि हर पैथी के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, मॉडर्न एलोपैथी में भी बहुत लिमिटेशंस है। बहुत बार बहुत से क्रॉनिक डिसीजेस है, उनका समाधान जो उनमें नहीं मिलता है वो आयुर्वेद में मिलता है। तो अगर हमारे शास्त्र का अगर इस तरह से डिटेल में हर एक टॉपिक का या जैसे कला का स्टडी करते हैं तो हमारे जो नए नए आयाम हैं वो खुलते जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम जो हमारा मेन उद्देश्य है आयुर्वेद का, चिकित्सा शास्त्र का, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ कर पाएंगे। तो ये सब मुझे इस व्याख्यान के माध्यम से बोलना था। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, शायद इस पूरे 1 घंटे के इसमें सभी कलाओं को या उसका जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में कवर नहीं कर पाया हूँगा, लेकिन मुझसे जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये हाईलाइट करने की कोशिश करी है। और इस सेमिनार के लिए आयोजकों ने मुझे बुलाया, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
Thank you, sir. Thank you very much, sir. In short span, you have given us the best of the valuable guidance and the lecture on the Kala Sharir. In this topic, sir, have gone through the Ayurvedic aspect of the Kala Sharir, correlation of the Kala Sharir, applied aspect of the Kala Sharir, treatment side, importance of the Kala Sharir, and in one side slide, sir, have described that the COVID-19 situation and the Kala Sharir. Sir, this will definitely guide us for further study to the students, and during the teaching, we also follow the way you have defined, discussed the Kala Sharir. Mainly the correlation of Kala Sharir is most useful for the study also, and for the teaching also, and for the in practice also. It is most useful, sir. Thank you very much, sir. From my department of Rachana Sharir, from my institute. Thank you. Thank you, and thank you very much, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Sir, ask me first. Hello. हाँ sir. Thank you, sir. Moving on towards the next session of today's webinar. The second session will be guided by Dr. Girish T. Kulkarni, sir. Let me introduce today's next distinguished speaker of our webinar. Honorable Dr. Girish T. Kulkarni, sir, is working as HOD and Professor, Department of Rachana Sharir in Sumati Bhai Shah Ayurved Mahavidyalay, Hadapsar, Pune. He has completed his BMS MD in Rachana Sharir. Currently, he is pursuing PhD. His teaching experience is almost 17 years, out of it 12 years PG teaching experience. More than 25 research papers are published in national and international peer-reviewed journals, and he has published his book on Marma Sharir in 2018. He has been credited for resource person for national and international seminars, work as organizing committee members, co-program and program officer of NSS,
Work as associate editor. Work as associate NAC coordinator. Sir has been felicitated by various awards like Outstanding Student Award in 1994, Best Paper Award in 2012, late Dr. Bhaskar Govind Ghanekar, Best Sharir Teacher Award for year 2050. I would like to invite Professor Dr. Girish T. Kulkarni sir on this platform as the speaker of session. Topic of his keynote address is clinical application of MRV. Please do post for my computer. Yeah, thank you. You can share a slide map. Yeah, yeah. 2 minutes. Huh? परत होतं. स्लाइड दिसत आहेत. हॅलो, हाँ सर. स्लाइड दिसत आहेत म्हणलं. Yes, sir. दिसतंय सर. ओके ओके. Good afternoon all. I welcome all participants in this second session of national seminar on applied aspect of Sharir, which is organized by L.R.P. Ayurvedic College, Islampur. To begin with, I would like to thank the organizers for inviting me as a speaker in this session. I'm grateful to Honorable Secretary and Founder Member of Prakash Shikshan Mandal, Honorable Sri Nishkandada Patil sir, Dean and Principal of Ayurved Medical College, Islampur, Honorable Dr. Virendran Minkire sir, and I especially thankful to Dr. Ranjit Mohite sir, who is Vice Principal, Professor and HOD of Rachana Sharir and Organizing Secretary of this webinar. I am also thankful to all team members and Dr. Mrs. Rokde Madam, who organized this webinar nicely. I am also thankful to all for giving me this opportunity to share my views on practical relevance of Marma Sharir. The knowledge of Ayurveda is dynamic, means it is Shashwata and it is internal, but this dynamic knowledge of Ayurveda is adaptive. It is proved to benefit according to need of time and it is not static. Ayurveda concepts like Marma Sharir, recently Dr. Sachin Khedikar sir presented his presentation on Kala Sharir, Srotasa Sharir. All these concepts are unique, but out of that, Marma Sharir is not only holistic, but based on minute, sincere, and practical observation. This Sharir has importance in today's era on various grounds.
Marma Sharir is having practical relevance in today's era. Therefore, this presentation regarding Marma Sharir or prevalence of this practical relevance of Marma Sharir is definitely relevant to student, physician and surgeon. The objectives of this today's presentation are to know the basics of Marma Sharir, to get detailed knowledge of each Marma with special emphasis on its with the Lakshana, to elaborate the practical relevance of Marma Sharir. These are all objectives we are going to discuss in this presentation. Now, we are going to begin with this slide. This is a basic of Marma Sharir. The nirukti of Marma is Maryanti iti Marmani. Maryanti iti Marmani means these points on in the body, human body, where trauma has been create severe pain or death has been occurred after some time or instant end has been occurred. So Dalhanacharya on his commentary on Sushruta Samhita defined as Maryantiti Marmani. Also important definition of Marma is Marmani Nama Mausasira Asti Sandhi Sannipataha Teshu Savata Eva Visheshena Pranatishta. Means the site where Mausasira Asti Snayu Sandhi all get together at the specific point and where there are prana, Dasha Pranatayana has been cited, and this site is called as Marma. And this Marma site is very important regarding the treatment point of view or surgical or panchakarma related also. Ashtangrudaya also defined. Please mute the mic. Santoshi Mane. Please mute the mic. Ashtangrudaya also explained there is a slight change in number of component which form Marma points according to Vagbhat, and Dhamni is additional component in the formation of Marma. And here Soma, Maruta, Teja, Sattva, Rajatama and Bhutatma are also reside at this point. So these points are called as Marma sites, and they are 107 in numbers. Now we are going to discuss about classification of Marma. All Marmani are classified according to Shadanga, according to Parimana, according to the
Rachanatmak bhag or structures which are involved in it. And Sushruta defined this classification of marma. And this is called Shadanga Anusar Vargikaran. According to Sushruta, this classification according to Shadanga. And these Shad Anga are Shakhagata, Ura Udargata, Pushtagata, and Griva Urdhu Jatrugata. Shakhagata means upper and lower extremity. Ura and Udargat means thorax and abdominal cavity. Pushtagit means back. And Griva and Urdhu Jatrugat means the marmani which are related with neck and head. Shakhagat marma are 22 in pairs, so they are counted as 44. In Udargat marma, 4 marma are single and other are in paired also. So there are 12 number of marmani are present in thoracic and abdominal region, and back region there are 7 paired marmani are there. So they counted as 14, and Urdhva Jatrugata means in related with Shira means head neck, they are 37 in number. Shushrutacharya also classified this 107 marma according to Parinam, and this Parinam are Satya Pranahar marma, Kalantar Pranahar marma, Vaikalyakar marma, Vishalyagna marma, and Rujakar marma. So, Sushrutaracharya, as per effect of trauma, the marma are classified into Sadhya Pranahar marma, Kalantar Pranahar marma, Vaikalyakar marma, Vishalyagna marma, and Rujakar marma. According to structural composition, Sushrutaracharya also explained the Maus marma, Sira marma, Snayu marma, Asti marma, and Sandhi marma. And Maus marma are 11 in number, Sira marma 41, Snayu marma 27, Asti marma 8, and Sandhi marma 20. And all these structures present at all sites of marma togetherly, but marma name according to dominance where this structure are present. So, where there is a dominance of Maunsa, then this is called Maunsa marma. And likewise, Sira, Snayu, Asti, and Sandhi, dominance gives their names to the marma point. Vagbhata also explained the structural part, but one important structure he added, this is an Dhamni marma, and this Dhamni marma are 9. But Vagbhat also counted 107 marmani and described separate marma. This is an Dhamni marma. These are vital parts where trauma has been occurred, and it produces the symptoms, and these symptoms are specific and general. And general symptoms are Deha Prasukti Guruta Samoha Sita Kamata Svedo Murchavani Shaso Marma Vittha Salakshana. Means whenever there is an trauma at marma site, it produces the symptoms like heaviness in body, sweating, vomiting, unconsciousness, syncope, dyspnea, etc. So, the final outcome of traumatic injury may vary according to the severity of the trauma. If the trauma is more severe, then marma point shows symptoms of previous type of marma. That is, it could be more serious or fatal. For example, if marma is a kalantar pranahar and trauma is severe, then it can show the symptoms like sadhya pranahar marma, and it can be fatal. So this is an this part is explained by Dalhan
एतेन पूर्व कर्मण मर्म कारण वैकल्या परस्य परस्य कार्य करोति एवं परम अपि मर्मात् अतिविद्ध विद्धादि कारण वशात पूर्वस्य कर्म करोति. So whenever there is an trauma on specific murmur or the trauma explain the type of murmur according to symptoms get produced. So now this parinamanusar vargikarana also influenced by this Agneya Soma Vayaviya or Vayu Panchamahabhuta, and according to this influence of this Panchamahabhuta on the marma side, they produces Viddha Lakshana. Sadhya Pranahar marma influenced by Agneya, so it shows more critical symptoms. Kalantar Pranahar marma influenced by Soma and Agni, and it produces some less fatal conditions. Likewise, Vaikalya Karmarma by Soma, so that there is tremendous pain or there is an Vaikalya Karatva has been occurred. And in last, Ruja Karmarma, which is influenced by only Vayu. So there these sides produces only pain. These are the measurement of marma, and Shushrutacharya called as marma praman. Urvi kurcha shira vitapa kakshadharan parshva sandhi. They are 1 angula praman. Sthanamula manibandha gulfa. These are 2 angula praman. Janu and kurpara 3 angula praman. Rudhay basti gud nabhi kurcha shrungataka simanta matruka dhammi. These are all sadhya pranahar marma, and they are 4 anguli praman, and remaining all these marma are half angula praman. Why this measurement of marma mentioned by Sushruta? Because this measurement is important, as it said to avoid this point while performing operatives, panchakarma, etc. That's why the praman is very important, or measurement is very important. Charkacharya specifically defined 3 marma, 3 marmi adhyay, because Shira, Rudhay and Basti, these are 3 important parts which are present in a human body, and due to this we can survive. So according to treatment, Charkacharya explained or give weightage to these 3 marma. So Shira, there is a definition by Charkacharya: pranaha pranabhutanam yatrashrita sarvendriyani jatu yat uttam anganam shirastab iti dhyate. Means Shira, where all indriya prana buddhi chitta are to be cited, and trauma to this region is fatal and gives immediate death, because all indriya and all prana gathered here. That's why Shira is a very important aspect according to Charkacharya. Likewise, Hruday and Basti are also important, and the trauma to these 3 marmani leads to death. That's why Charkacharya mentioned treatment focusing all these 3 marma. Why marma sharir is important? In relation to instant death at the time of injury, and they are influenced by Agneya Panchamahabhuta, and this is in Sadhya Pranahar marmani. In relation to delay death from the first minute of trauma or injury to several days or weeks, influenced by Somagni, and these are Kalantara Pranahar marmani. In relation to death after extracting out the shalya or foreign body from the site, which gives immediate death, and these marma sites are called as Vishalyagna marma.
In relation to deformity which persists after trauma or injury, that is Vaikalya Marma. And lastly, only pain or peak of injury in relation to pain are Rujakar Marma. Now we are going to discuss 107 Marma accordingly, and the first one is a Marma of head and neck, where these all important sites related with the Satya Pranahar. And according to Charaka, the Shira is very important or fatal site. Now, first one is a Nila Manya, Sira Marma and Vaikalyakar Marma. All these four dhamanis on both sides of Kanthanadi, and one pair of Nila and other is Manya. An injury to either of them causes mukata, means loss of speech, and swara vikruti means defective voice and loss of taste also. Term dhamni has been used here for nerves, not an dhamni means not a artery, but it is used for the nerve. They supply to larynx, tongue, which intervene by glossopharyngeal or hypoglossal nerves respectively. These branches of 10th cranial nerves, means vagus nerve, also played its important role here. Injury to this nerve causes dumbness, speech defect, and loss of taste. That's why the Nilamanya are Sira Marmani, and it produces Vaikalya Karatva, and means which Vaikalya Karatva? It produces Mukata or Swara Vikruti. Next one is an Matruka. It is also Grivagat Marma. It is Sira Marma and it is Sadhya Pranahara Marma. On both sides of neck, there are four important vessels are present, and they termed as a Sira. They should be interpreted as internal carotid artery, external carotid artery, internal jugular vein, and external jugular vein. These all four important vessels are present in this region. That's why they are called as Matruka. When these vessels are injured, early death will be take place due to lack of blood supply to the brain. There is no supply of oxygen to the brain, and it converted into shock, and ultimately the death has been occurred. So this Matruka Marma are very important, related with the neck region, and that's why they call it, it is called as Satya Pranahara Marma. The internal jugular vein is easily accessible for recording venous pulse, and it is significant in partial or total thyroidectomy. The thyroid is present here in this region, and this lobe, right lobe or left lobe or both lobe, get enlarged, and it is called as goiter, and it produces pressure on these large vessels, and removing this lobe of thyroid or total lobectomy or partial lobectomy of thyroid, we can survive the internal jugular vein and external jugular vein, because they place near to these lobes, and so that it is then significant in partial and total thyroidectomy. In congestive cardiac failure, the internal jugular vein is dilated and engorged. Deep cervical lymph nodes lies in an internal jugular vein and often become adherent to the vein in malignancy or tuberculosis. Whenever there is a tuberculosis, the cervical nodes which are present above the clavicle, or they are related with the apex of the lung, and they are near to these large vessels. That's why they are very important. Or the removing of these lymphatics during operation, or if there is an malignancy related with breast, then total removal of these lymph nodes from the sides, and the apical lymph nodes are to be removed. And with removing these lymph nodes,
we can survive the external branches, external jugular vein branches or carotid arterial branches. Okay. Now, next one is an Krukatika marma. This Krukatika marma is a Sandhi marma, and this is a Vaikalyakara marma. The articulation point between occipital bone and atlas vertebra, that is atlanto-occipital joint, where this Krukatika marma placed, and this is an site for Sandhi. And Vaikalyakar, whenever there is an trauma, or they said whenever there is an accidental injury which produces noding of the head, and this noding of the head, according to Ayurveda, is called as Chalamurdhata. Chalamurdhata. Now, next one is an Vidura marma. It is related with ear, or specifically, we mentioned the mastoid process for the site of Vidura, and this is an Snayu marma and Vaikalyakar marma. It is located back of the ear, means related with mastoid process. Injury to this nerve causes deafness because it is cochlear part of vestibulocochlear nerve where it gets hampered according to site. Now, applied anatomy regarding this Vidura marma, lesion of cochlear part of vestibulocochlear nerve results in deafness. Whenever there is an trauma to the middle ear or internal ear, the cochlear part get affected, and due to this affection, deafness is produced. Now, the second one, injury to the back or below the ear may destroy tympanic membrane or ear ossicle, causing interruption in conduction of sound. And this is called also deafness. Damage to middle cranial fossa, which is related with the skull, causes damage to vestibulocochlear nerve because it passes through internal acoustic matters and causes also deafness. So this vestibulocochlear nerve, whenever there is a trauma, it gets affected and it produces deafness. Next one is an Phana marma. This Phana marma is Sira marma. It is related with nose, or more correctly, the membranous part of the nose, and it is an Vaikalyakar marma. Phana marma is olfactory mucosa lying partially on the lateral wall of nose and partially on both sides of nasal septum. Olfactory cell mucosa is attached with the nasal passage, and trauma to this causes agandha jnanam, means loss of smell sensation. And damage to this phana marma causes loss of smell. There is an little area on the septum of nose causes epistaxis, means blood. Who is there? Who is there? Any problem regarding my presentation? Please mute. And fracture of the frontal and nasal bone causes rupture of meninges and causes leakage of CSF through nose. That's why Shushrutacharya said, Nasa hi shirsho dwara here. Okay. Next one is Apang and Avarta marma. Apang is related with outer canthus, and Avarta marma is an upper side of eyebrows below the margin of hair. Injury to these sides causes blindness or weakness of the eyesight. Trauma to this site causes damage to optic nerve, which leads to blindness. This is andhata, or it may be due to hemorrhage or thrombus in central artery of the retina. Superior ophthalmic vein gets ruptured and leads to cavernous sinus thrombosis, and it also causes andhata or blindness. Next one is an shankha marma. Shankha marma is asthi marma and sadhya pranahar marma. It is related with temporal bone. On the outer side of temporal bone, it plays,
And here this temporalis muscle with the temporalic membrane is there, and trauma to this causes immediate death. Injury to the middle meningeal artery, which is related inside the temporal bone. That's why it is dangerous and causes immediate death. These arteries are torn in head injuries, causing extradural hemorrhage. And hematoma formed due to hemorrhage presses on motor area, giving rise hemiplegia, and all these condition finally causes death. So that's why Shankha Marma is a Sadhya Pranahara Marma. Now this is an Adhipati Marma. It is also Sandhi Marma, Sadhya Pranahara Marma. It is related with the bregma point externally on the skull, and internally it is related with venous sinuses, meninges, and lateral ventricle. Injury to this marma causes immediate death because it leads to meningitis, infarct at sinuses, and central hemorrhage and causing death. Now this next one is an Utshepa marma, Snayu marma, and Vishalyagna marma. Utshepa marma located near the temporal region or joining or articulation of zygomatic and temporal bone. This is a perfect site of Utshepa marma. And trauma on this Utshepa marmani, or whenever there is an shalya is present at this site, we can't remove the shalya, otherwise can't get extracted outside, and there is a this cause immediate death. Here temporal artery or zygomatic temporal artery are located. As a foreign body is taken off, profuse bleeding will start and patient goes in hemorrhagic shock. That's why Utshepa marma is an Vishalyagna marma. Like that, Stapni marma is in Sira marma, and it is also an Vishalyagna marma. Only 3 marma are Vishalyagna marmani, and out of that, Stapni marma is a singular, and it is in Sira marma. It is related with the midpoint of eyebrows where glabella point is placed, and it is related with frontal sinus, nasal arch, and frontal bone. It starts from crista galli inside the frontal bone, where the dura mater get adherently attached. As the weapon or instrument is taken off, profuse bleeding will start causing intracranial hemorrhage, and which cause shock and death. Now, this one is Simanta marma. This Simant means there are articulation of 5 bones, skull bones, and this site is called as a Simant, and this is an Sandhi marma and Kalantra Pranahara. Trauma to this marma leads to Unmada Bhaya Chitta Nasha and Mrityu due to injury to cerebrum and middle meningeal aspect. Now, Shringatak marma. It is also a very important marma where 4 important structure located there, and it is called Sira marma or Sadhya Pranahara marma. It is a network of vein, circle of Willis, which is related with inferior surface of cerebrum, cranial nerves, and cavernous venous sinuses are located. That's why this Rangatak marma is very important, and this is an Sadhya Pranahara marma. Death leads to hemorrhage and immediate marana is there. Cavernous sinus thrombosis, which causes sepsis, meningitis, and shock and death. So these are all 37 marmani which are related with Urdhva Chaturgata part. Now we are going to discuss Ura and Udargat, means thorax and abdominal region. First one is a Hruday marma. It is very important. It is a Sira marma. Charkacharya also explained this Hruday marma in 3 marmi adhyay. It is a Sadhya Pranahara marma. Hruday is a seat of prana, oj, sanchara sthana of marma according to Ayurveda. But modern science explained that the important function of blood supply
to whole body is carried out by heart. Hence, any trauma to this lead to death. So, Hridaya is an important organ which supply oxygenated blood to each and every tissue of our body, so that whenever there is a trauma, externally or internally, causes death, immediate death. And applied anatomy are as obstruction of superior vena cava, aortic aneurysm, congenital anomalies like dextrocardia, patent ductus arteriosus produces blue baby syndrome, arterial septal defect, abnormal communication between two arteria, tricuspid atresia. This is a congenital absence of tricuspid valve. All these important applied aspect causes death whenever there is an this applied anatomy has been appeared. Now then, next one is an Stanamula. There are 4 marmani which are related with thoracic region. These are Stanamula, Stanarohita, Apalapa and Apastamba. And these 4 marmani are Kalantar Prana. Only one Rudhaya is a Satya Pranahar Marma, which is located in a thoracic region. But these 4 marmani are Kalantar Pranahar Marmani. These are Stanamula, Stanarohita, Apalapa and Apastamba. And they are related with the respiratory system. They are related with respiratory system. So that's why in this COVID-19 part, these all 4 Kalantar Pranahar Marmani are very important according to Ayurveda treatment part. Okay, so this is Stanamula, Siramarma, situated 2 anguli below the mammary gland. Trauma to this causes Kaphapurna Koshtata, leading to Kasha, Swasa and Mrityu. And Kaphapurna Koshtata should be considered as pneumonia or pulmonary tuberculosis, which lead to produce as cough, dyspnea, ultimately death. Next one is Stanarohita. Stanarohita is a mouse marma, and this is Kalantar Pranahar marma. It is located 2 angul below the nipple, and trauma to this causes Rakta Purna Koshtata, means hemothorax, due to internal hemorrhage leading cough, dyspnea, and ultimately death. Hemothorax salvage a hemorrhage in the form of hemoptysis, carcinoma, or compression injury, which may cause internal hemorrhage, and this produces swashankas and lastly death. Okay. Next one is an Apalapa marma. Apalapa marma or Sira marma, Kalantar Pranahar marma. It is situated below spinous process of scapula on back side. Trauma causes Raktena Puya Bhavena, means pyohemothorax is there, or it is called empyema, and ultimately it causes death. It is Sira marma. Lung abscess or empyema causes death, and this is called as Apalapa marma. Now, Apastamba, it is very important in today's area. Sira marma, Kalantar Pranahar marma, located on the both side of chest or trauma to this causes Vata Purna Koshtata. This is pneumothorax, and it lead to Kasa, Swasa and Mrityu. 2 Vatvaha nadi should be taken as a bronchi with their divisions, and this Vata Purna Koshtata is to be correlated with pneumonia in COVID-19. So this is Apastamba marma, which is Kalantar Pranahar marma. Now in the marmani related with Udargata, this means abdominal cavity. First one is a Gudha marma. According to Shad Chakra, Gudha is a site for Muladhara Chakra. Sir, Sorry. sir, I have question 1. In last slide, we are going to discuss questions and answers. Okay. Okay, sir. So Gudha marma. It is a mouse marma and Satya Pranahara marma.
It is an anal canal, is the terminal portion of large intestine. Applied related with this Buddha marma are first one is Maran. Why Maran has been occurred? The hemorrhagic piles or external piles lead to profuse bleeding, may cause anemia, and then infection leading to peritonitis and finally death. Fistula in ano, due to tuberculosis or diabetes mellitus, fistula in ano or painful pedica, which are present deep rooted in the Gudha region, and this gives Bhagandar, and they may spread the pus pockets in a gluteal region, and this is due to this septicemia, death can be occurred. Fistula in ano, it is an abnormal epithelialized tract connecting to two cavities or the cavities with exterior. And pericarpica and rectal incontinence also causes death. These are the applied aspect of the Buddha marma. Now, Basti marma. This is Sira marma and Sadhya Pranahara marma. Basti means urinary bladder, which acts as a reservoir of urine. Trauma to this may cause a rupture of bladder, leading to shock and death due to acute infection, developing peritonitis and death. And death due to peritonitis or distended bladder may rupture by injury to lower abdominal wall, which causes peritonitis, and due to this peritonitis, death can be occurred. In various abdominal or pelvic surgeries, the bladder should be protected from the injury or rupture. Now, this is a Nabhi marma. This is Sira and Sadhya Pranahara marma. In between Amashaya and Pakvashaya, Nabhi marma is situated. It is a site of a prana. Umbilicus is the originating point of whole circulatory system in fetal life, but it has no relevance in adult life. Persistence of vital or intestinal duct or connection between urachus and bladder, persistence of physiological hernia, whiffing umbilicus, and acquired abnormalities like umbilical hernia, caput medusae. All these applied aspects are related with Nabhi marma, which causes also death due to peritonitis. That's why Nabhi marma is an Sira marma and Sadhya Pranahara. We are going to discuss Prushthagat marma now. This is an Katika Tarun marma. Sorry. This is Asti marma and Kalantar Pranahara marma. On the both side of vertebral column, the Krikatika marma is situated in the each pelvis bone. It is an Asti marma. It is correlated with hip bone, and this hip bone unite together with sacrum posteriorly and pubic symphysis anteriorly, and acetabular cavity articulates with head of the femur, and here hip joint and internal ischial part, pubic part, and ilium part get articulated, and sacroiliac joints are there. So that this is an Asti marma where the ligaments are there, where important structures of abdominal part or pelvic part placed or protected by this Asti part, or this is a pelvic region. So trauma to pelvic vessels due to sacral fracture may damage nerves or large blood vessels and leading to blood loss. And it causes Pandu means anemia, Vivarnata means discoloration, Hinarupa means diminishing complex, and syncope with the death. Okay. So now next one is an Kukundar marma. This is a Sandhi marma. It is Vaikalya marma. On the both side of vertebral column, Kukundar marma is situated. Injury to this causes chestopaghata, means loss of movement, and trauma to ischial tuberosity causes damage to the sciatic nerve, because near to ischial tuberosity there is a greater sciatic notch, and from this greater sciatic notch, sciatic nerve and some important artery and veins come outside and goes inside,
and this is a greater sciatic nerve. And trauma to this ischial tuberosity may damage sciatic nerve, or it may damage to the large vessels, and it produces Vikalangata. That's why it is called Vaikalyakara Marma. Vaikalyakara Marma. Now, Nitambo. This is an Snayu Marma or Vaikalyakara Marma. It is situated both side of pelvic bone. Trauma to this causes Adhokaya Shocha, means atrophy to the lower part of body muscles or lower limbs. Daurbalya means weakness and mrityu. It results with weakness of lower body parts and inability to walk. This is a Snayu Marma. These Snayu or ligaments related with the sacroiliac joint, hip joint, and the trauma to this side, this Nitamba Marma, produces Vikalangata. That's why it is called as Vaikalyakara Marma. Now, Bruhti Marma. This is a Sira Marma and Kalantar Prana Marma. It can be correlated with hepatic and splenic vessels. And whenever there is a trauma to these splenic or hepatic vessels, causes severe blood loss, and after some days it can happen the death. There is a splenectomy or cholecystectomy or carcinoma of liver. All these are the important part related with the portal vein, splenic vein, hepatic vein, and they are also related with this Bruhati Marma or Sira Marma. Now, Amsophalaka, this is an Asti Marma and it produces Vikalangata. That's why it is called Vaikalyakara Marma. It is situated on the back on either side of vertebral column. Trauma to this causes Bahu Shoshata, atrophy or wasting of upper limb. It is supraspinous region of scapula because it consists suprascapular nerve and insertion and origin of some muscles related with movements of upper limb, and injury to this lead atrophy of this muscle. This is called Bahu Shoshata. Next one is an Aunsa Marma. Aunsa Marma is a Snayu Marma or Vaikalyakara Marma. It is situated in between the Aunsa part and neck region or Manya region, and which is unitedly related with scapula and shoulder. Trauma to this causes Stabda Bahuta, rigidity to the upper limb, and it is an Snayu Marma because shoulder joint and small other joints are there, which connected to each other by the ligaments. That's why it is called as Snayu Marma. It produces Stabda Bahuta. Now we are going to discuss about Marma of Urdhvagata and Adho Shakhagata. First one is Tala Rudhaya Marma. Tala Rudhaya Marma. Maunsa Marma and Kalantra Prana Marma. It is located middle of sole and middle of palm, and trauma to this Marma causes death due to inflammation and septicemia. So here the Ruja and Shop, which produces severe pain, and due to inflammation, septicemia can be occurred, and due to this septicemia or whenever there is a crush injury related with foot or hand, the profuse bleeding through these arches or branches of these arches related with the tarsal and palmar part, and which again causes a death. Now, Shipra Marma. It is located in between Angushta of foot near by toe, and trauma to this causes Akshayapaka means convulsions or Marma or Marana or death. In upper limb, it is situated in between principes, pollicis and radialis indices, and it is related with branches of palmar arch. In the lower limb, it is related with polar arch. Rattakshayena Marna. That's why it is called Shipar Marma or Kalantar Prana. Now, Gulf or Manibandha, Sandhi Marma and Ruja Karma.
Gulf is situated at the junction of Pad and Janga. Trauma to this causes Ruja, Stabda Padata, and Khanjata. Likewise, in Manibandha Sandhi, which is situated in the upper junction of hand and forearm, injury to this marma causes Kuntata. Now, again important marma, this is Indramasti marma or Mansa marma. This is Kalantra Pranarama. Located above the hill in midline. Similarly, in upper limb, it is situated in forearm towards the wrist in middle line. Injury to this cause death due to hemorrhage. Now, Janu and Kurpar. Janu at the junction of Jangha and Uru means leg and thigh. It is important Sandhi marma, and trauma to this marma causes Khanjata means limping. Nowadays, operations of this ligamentous part can be done and protected from the injury to these ligaments. Injury to this marma causes punita. In lower limb, it is situated between thigh and leg. Likewise, kurpar marma is situated in between forearm and arm, and it causes restricted movement due to pain and inflammation, and which gives punita, okay, or bursitis. Now, next one is a ani marma. This is snayu marma and vaikalyakar marma. 3 angula above the knee joint or elbow joint. Trauma to this causes shofa vidruti, stabdata, and in upper limb, this marma is situated 3 angula above the kurpara sandhi, and in upper limb, it is related with the tendon of biceps. Trauma to this causes shofa vruddhi means inflammation, and stabda bhavtaman means rigidity. Next one is a Purvi and Bhavi marma. It is Sira marma and Vaikalyakar marma. Lies in middle of thigh or mid of the arm. Trauma to this causes Shakti Shosha or Bahu Shosha. Then Lohitakshi marma. This is Sira marma and Vaikalyakar marma. It is situated above Urvi marma or below the pelvic point near the proximal end of the femur and above Bahavi marma in upper limb. It consists brachial artery. Trauma to this causes Sakti Shosha or Bahu Shosha, means atrophy or paralysis. Next one is a Vitapamar. This is a Snayu Marma or Vaikalyakar marma. It is situated between pelvic junction and testes in male, and trauma to this causes Shandata, sterility in female, and Alpashukrata, this is oligospermia. But in female, this ligament, inguinal ligament, related with the round ligament or broad ligament of uterus, and it may also causes vikruti or sterility in the female also, because round and broad ligament are related with the ovarian aspect. Okay, that's why it is Vaikalyakara marma. Now, Kakshadhara marma. This is an Sira marma and Vaikalyakar marma. In upper limb, Kakshadhara marma is situated between thorax and axilla, where this brachial plexus is placed, and due to the trauma on a brachial plexus, number of applied aspects can be observed, like earth paralysis, cumbal paralysis, injury to nerve to the serratus anterior. It forms winging of scapula, injury to the nerve cord, deformity of claw hands. All these injuries due to the all of these applied anatomy can be find out due to the trauma on a brachial plexus. Okay. आता आपण बघूयात मर्म चिकित्सा. मागे मी सांगितल्याप्रमाणे पिछले स्लाइड में हमने बताया कि चरकाचार्य ने मर्म चिकित्सा बताई है और उन्होंने मर्म चिकित्सा बताते समय शिर, हृदय और बस्ती को इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया है. तो हृदय मर्माघात के लिए चरकाचार्य क्या कहते हैं? श्वास बलक्षय, कंठशोष, जिह्वा निर्गमन, मुख तालुशोष, अपस्मार, उन्माद, प्रलाप, चित्तनाश इत्यादि लक्षण दिखते हैं. दोष शमन करना चाहिए, रस रक्त मांस प्रसादन करना चाहिए, ओजो वृद्धि कर उपचार करने चाहिए, जैसे कि सुवर्णकल्प रक्त प्रसादन के लिए है
और लोह भस्म, सुवर्ण माक्षिक, ये जो है वो भी रक्त प्रसादन के लिए यूज किया जाता है। दशमूल बस्ती है जो कि सौम्य विरेचन, पित्त डोमिनेंस के लिए दिया जाता है। मौखिक कामदुदा और गुरुची भी उसमें दिया जाता है। और सुंठ, गुग्गुल और आरोग्यवर्धिनी के जैसे कल्प भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। और मन शांति, चित्त शांति, उन्माद प्रलाप के लिए, मन शांति के लिए ब्राह्मी जटामांसी, प्राणायाम, ध्यान धारणा, ऐसे आश्वासन चिकित्सा भी करनी चाहिए। शिरोपघात के लिए रक्त प्रसादक और मज्जागत उपचार होने चाहिए। विरेचन, बस्ती नस्य और स्वर्ण कल्प भी इसमें यूज किया जाता है। बस्ती मर्माघात में रक्त मांस मेद प्राकृत रखने चाहिए। सिद्ध दुग्ध प्रयोग, घृत प्रयोग करना चाहिए। या बस्ती और विरेचन जैसी चिकित्सा भी इसमें की जा सकती है। So at the last, we are going to discuss about practical relevance of the Marma Sharir. One can easily get the latest knowledge about peaks of injury in relation to instant death or delayed death or continued handicap or painful life. Means Satya Pranahar Marma, Kalantar Pranahar Marma, Vishalagna Marma, Vaikalyakar Marma or Rujakar Marma. They are also in relation to extraction of the foreign body, means Vishalagna Marma. And anatomist or surgeon can easily identify or locate the exact structure involved in this trauma and then link it with its future result and can proceed for satisfactory and convincing management. And Marma point therapy is a traditional Ayurvedic massage technique that's believed to help sustain the flow of energy throughout our body. By using Marma knowledge, various protective shields can be designed for warriors in the defense force. To avoid sport injury, also the Marma knowledge is very important. While performing operatives, these Marma sthana should be avoided. During Shiraved, we should not be done Shiraved at this Marma point. While performing Panchakarma, Shira Rudhay Basti should be always be protected. And in South India, the Panchakarma Chikitsa like Pizicil, Dhara, Navarkazi also developed on the basis of Marma knowledge. And in South India, Marma is called as Varma knowledge. This is my textbook, which is approved for BMS course as a reference book by Maharashtra University of Health Sciences, Nasik. So please purchase. I am requesting all the students or organizing committee members purchase my book or keep this book in your library for the reference, or this is a reference book for the first BMS courses as well as MD courses also. Thank you for giving me this opportunity. If you have any question, please ask. Someone asked one question regarding Marma point or COVID-19. I supposed to be. Please ask if you have any doubt. सर मर्माची डेफिनेशन इन डिटेल पाहिजे होती थोडीशी मगाशी त्या स्टुडंट्सला. मर्माची इन डिटेल डेफिनेशन म्हणजे काय, तर मर्मस्थान हे असं स्थान आहे की ज्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर जे आहेत, मांस, शिरा, अस्थि, संधी, स्नायू, हे जे काही 5 स्ट्रक्चर्स आहेत ते तर स्ट्रक्चर्स त्या ठिकाणी असणारच आहेत, परंतु त्यापैकी एखाद्याचा डॉमिनन्स त्या ठिकाणी जास्ती प्रमाणामध्ये आपल्याला दिसत असेल तर त्यानुसार त्याचं नाव केलंय. जसं की मांस मर्म असेल, शिरा मर्म, म्हणजे शिरा मर्म म्हणजे काय, तर तिथं शिराचं डॉमिनन्स जास्त आहे, परंतु त्या ठिकाणी बाकीचे स्ट्रक्चर प्रेझेंट नाही का, नक्की आहे त्या ठिकाणी. परंतु हे सगळे स्ट्रक्चर असूनही परत सुश्रुताचार्य काय म्हणतोय की प्राणहा तिष्ठन्ति, त्याचं सन्निपात असून त्या ठिकाणी
प्राणातयन आहेत किंवा द्वादश प्राण जे सांगले त्यापैकी एक प्राण त्या ठिकाणी आहे आणि त्या प्राणाचं संरक्षण त्या स्थानामध्ये आपल्याला करायचंय आणि त्या स्थानांना त्यांनी मर्मस्थान असं म्हटलेलं आहे. हे एक त्याचं एलॅबोरेटिव्ह डिस्क्रिप्शन असेल असं मला वाटतं. थँक्यू सर. आणि आणखीन एक प्रश्न होता सर, अपस्तंभ आणि कोविड-19 त्याचं कसं आपण रिलेशन करू शकतो? आता कोविड-19 मध्ये बघा, पहिल्यांदा रेस्पिरेटरी सिस्टीम पासून सुरुवात करतो आपण. जर म्हणलं तर आपण नोज, त्याच्यानंतर फॅरिंग्स, लॅरिंग्स आणि त्याच्यानंतर मग इन्फेक्शन रिलेटेड विथ ब्रॉन्कस अँड लंग्स किंवा ॲल्व्होलर पार्ट असं म्हणतो. परंतु त्यामध्ये पूर्णतः कोष्ठता दिसत नाही. आपण जेव्हा एक्सरे चेस्ट करतो कोविडचा, त्या ठिकाणी आपल्याला छोटे छोटे पॅचेस दिसतात आणि हे पॅचेस क्लिनिकल कोरिलेशन केलं तर त्या ठिकाणी फक्त कफ असतो, म्हणजे कोरडा कफ असतो. त्या ठिकाणी स्पुटिंग नसतं कुठलंही. म्हणजे त्या ठिकाणी वातपूर्ण कोष्ठतामध्ये जे काही लक्षणं कोरिलेट आपण करू शकतो तशा पद्धतीचं पिक्चर हे कोविड-19 मध्ये आपल्याला दिसतं असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. आणि दिस इज अन अपलाप मर्म आणि त्याची चिकित्सा ती वातानुरूप करावी असं मी म्हणेन. म्हणजे सुवर्णकल्प असतील, वातशमन चिकित्सा जी आहे त्या ठिकाणी करावी असं मी म्हणेन. Okay, sir. Thank you, sir. All participants, sir has given the lecture on the Marma Sharir, which is the vast topic. He has divided the topic into three parts: the basics of Marma Sharir, correlation of the Marma Sharir, and the applied aspect of the Marma Sharir, which is the most important part. The total lecture is divided into basic, that is the Nirupti of Marma, Vyakhya of Marma, types of the Marma, types according to Sthana, according to Rachana, that is structure, or according to the traumatic effect of the Parinam. Next point, sir have discussed that is the Mahabhut relation in the Marma and Parimana of the Marma. The Charkacharya who have described the three Marma, that is Shiva, Hridaya, Vasti. The most important part the sir have discussed is the correlation of the structures of Marma, which is most difficult to teach and to study. Applied aspect of the Marma. And the last two parts, the Marmaghat Chikitsa and practical relevance of the Marma. So thank you very much for covering this vast topic in a short span. So you have guided the students and the teachers regarding the Marma Sharir in the simple way. This will definitely useful to the students for the study as well as to the teacher for the teaching and for the applied aspect of the Marma. Again, thank you very much, sir, Thank you, your lectures. Thank you. Thank you, sir, for and all organizing team. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sir. Now I would like to invite Dr. Sandeep G. Patil, sir, Assistant Professor, Department of Rachana Sharir, to conclude today's webinar on applied aspect of Sharir. Good afternoon. Today, Department of Rachana Sharir of our Institute, Loknete Rajarambapu, Patil Ayurvedic Medical College, Hospital, PG Institute and Research Center, Islampur, has arranged the national webinar on applied aspect of Sharir. On behalf of our Institute and Department of Rachana Sharir, a big thank you to today's eminent speaker, Dr. Sachin Khedikar sir, Principal and Professor, Shri O.H. Nazar Ayurvedic College, Surat, and Dr. Girish Kulkarni sir, HOD and Professor, Department of Rachana Sharir, Sumati Bhai Shah, Ayurved Mahavidyalay, Hadapsar, Pune. Sir, I would like to appreciate both of you for offering your service and time to deliver lecture in the webinar. The Institute and our department appreciate your work and seek the same from you in future. Thank you, sir. I also extend my thanks to Shri Nishikant Bhosle Patil, Dada, founder Prakash Shikshan Mandal, Islampur, for their valuable support
and guidance. We are thankful of our chairman, Shri Sanjay Jadhav sir, secretary Shri Nitin Patil sir, and Shri Sandeep Yadav sir for their support. Our department is very much thankful of respected Dean sir, Dr. Virendra Minkire sir, for their timely guidance and enormous cooperation in organizing the webinar. Our department is greatly thankful of PG Director Dr. Pramod Kanap sir, PhD Director Dr. Avsera Patil sir, Hospital in charge Dr. Vishal Patil sir for their guidance and help. We are deeply grateful and thankful of all the respected faculties of our institute and other institutes for their active participation in the webinar. Thank you very much all PG and UG students for your active presence in the webinar. We are fortunate enough to be backed by a team of motivated and dedicated ICT department, Dr. Sayyed sir, Dr. Ajit Patil sir, and Shri Abhijit Patil sir, for their hard and valuable work. Thank you very much, sir. Please fill the online feedback form from given link to get e-certificate. Thank you, one and all. Thank you very much. कार्यक्रमाची जी फीडबॅक लिंक आहे ती चॅट बॉक्स मध्ये झूमच्या आणि YouTube वर लिंक वर टाकलेली आहे. प्लीज फिल द लिंक अँड गेट युअर सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट.